अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। A few weeks ago मैंने एक वीडियो बनाई थी about applying for master's programs and scholarships abroad as a Pakistani, and this video is sort of a follow-up to that. So in this video मैं अपना experience share करूँगी about applying for and receiving the Chevening Scholarship to study in the UK. Now the Chevening Scholarship is a fully funded scholarship for master's studies in the UK. इसमें बहुत से मुल्कों के applicants apply कर सकते हैं और पाकिस्तान उनमें से एक बहुत major country है. Not only is the cost of your education totally covered, but आपको एक stipend भी मिलता है अपने monthly expenditures के लिए. तो सबसे जो बेसिक सवाल है वो ये है कि ये स्कॉलरशिप है क्यों और ये किन लोगों को मिलती है. The very basic idea of this scholarship is that they look at your leadership skills and your desire to be a change maker in your community. So a very important thing is that you have to demonstrate कि आपके पास पास में leadership experience है और आपके पास future के लिए कोई vision है जिसके थ्रू आप अपनी community की help कर सकते हैं. And tied into this is the fact that to apply for this scholarship, you need at least 2 years of work experience. Let me explain that it does not have to be 2 years of work experience after your university ends. It can also be work experience that you acquired while you were still studying. Now, in my case, as I've discussed before, I started working at 19 when I went to university, and I had a part-time job through the course of my 4-year degree. And because of that, जब वो डिग्री ख़त्म हुई तो मेरे पास इतने आवर्स बन चुके थे ऑफ वर्किंग कि वो 2 years of full time work consider होता है. I have other class fellows too who also used to work part-time, and that's why when we graduated, immediately we were able to apply for this scholarship. If you have graduated लेकिन आपके पास work experience नहीं है तो फिर आपको 2 साल काम करना पड़ेगा to gain work experience, and then you can apply for the scholarship. इस साल की स्कॉलरशिप्स की एप्लीकेशन खुल चुकी हैं और 2 नवंबर तक खुली रहेंगी. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आई वुड रियली सजेस्ट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द एप्लीकेशन नाउ. यू स्टिल हैव ओवर अ मंथ, सो देयर इज एम्पल टाइम टू अप्लाई. एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत रिपीटेडली आता है वो ये है कि जीपीए कैसा होना चाहिए. नाउ लेट मी बी ऑनेस्ट, माय जीपीए वाज नॉट अमेजिंग बट इट वाज नॉट बैड ईदर. बट आई नो पीपल जिनके जीपीएस मुझसे बहुत ज़्यादा थे जिनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिली थी. एट द सेम टाइम आई नो सम पीपल जिनका जीपीए मुझसे भी थोड़ा कम था और उनको ये स्कॉलरशिप मिल गई. आई एम नॉट इम्प्लाइंग दैट आई फेल्ड कोर्सेज और एनीथिंग. आई एम जस्ट सेइंग आई डिड नॉट हैव अ 4.0 जीपीए. So the point I'm trying to make is that they look at your overall profile and the fact that you can demonstrate that when you come back to your country, you will do something useful and meaningful. So GPA, yes, it does matter. Of course, if you failed 10 times in university, that is a problem, but it doesn't have to be a 4.0. It doesn't have to be a 3.6. You can apply with lower GPAs as well, as long as you have a solid profile. And this is where your extracurricular activities really come into matter. So that is what really shapes your profile. So कोई भी स्टूडेंट सोसाइटी जो आपने ज्वाइन की हो, कोई वॉलंटियरिंग वर्क जो आपने किया हो, कोई मूवमेंट जो आपने अपनी कम्युनिटी में लीड की हो, दीज आर ऑल थिंग्स दैट बिल्ड इन टू योर प्रोफाइल. एंड वंस यू स्टार्ट आंसरिंग द एप्लीकेशन, यू विल एक्चुअली रियलाइज कि पढ़ाई से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पे एम्फोसिस है क्वेश्चंस में. Application form is very straightforward. I will link it below. You can start filling it and save it and come back to it at a later time as well. The trickiest part of the application form are the 4 essay questions. Now, the essay questions are where they really assess your personality, your leadership skills, your networking skills, and this is where you need to be really creative. So what you have to do is, for example, आपका कोई leadership experience था, and it doesn't have to be, most people applying are very young, so it doesn't have to be like CEO level leadership. It can be something very small like leading a student society. और आपने demonstrate ये करना है कि कौन सी सिचुएशन थी और उसमें आपने कैसे अपने लीडरशिप स्किल्स शो किए. सो यू हैव टू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स, यू हैव टू थिंक ऑफ सिनारियोज दैट यू हैव बीन इन. नेटवर्किंग इज वेल, यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट कि आपने कैसे नेटवर्किंग की और उस नेटवर्किंग का आपको क्या फ़ायदा हुआ, दूसरों को क्या फ़ायदा हुआ. एंड व्हाट दे ट्राइंग टू असेस इज कि जब हम इस बंदे को स्कॉलरशिप पे भेज देंगे तो विल दे जस्ट सिट अलोन ऑल डे और विल दे एक्चुअली गो आउट एंड नेटवर्क विद अदर पीपल. Now for these questions, I would really recommend that you would look at the questions first, you start writing your answers, and when you have the final answers for all 4 questions, have a friend proofread them and they can also give you their input, but you have to make sure you write them yourself because the interview is actually based around these questions. Another thing you can do is Facebook पे बहुत से groups बने हुए हैं of Chevening applicants. सो यू कैन जॉइन वन ऑफ दोज ग्रुप्स. और जब भी आपको समझ नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन को कैसे भरना है या इस चीज़ का मतलब क्या है, तो यू कैन आस्क ऑन दैट ग्रुप एंड समवन आउट देयर विल एडवाइज यू. अदर थिंग यू नीड टू नो इज़ कि जब आप एप्लीकेशन भेजते हैं उससे पहले आपने अपनी 3 यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंसेस भेजनी होती हैं.
So what you need to do is do your own research on UK universities जिनके programs आपको interesting लगते हैं, and then rank them in order of preference. So in the form you will say this is my first preference, this is my second preference, and this is my third preference. Now some years Chevening also has a list of priority areas for each country, so it makes sense to go on their website, look at the priority areas for your country and try करेंगे जो 3 programs आप list कर रहे हैं वो एक तो आपके interest और आपके background से obviously aligned होने चाहिए, but also it would be interesting if they are part of the priority areas for Chevening. Now, like I said before, the application deadline is on the 2nd of November. So once you apply for the Chevening Scholarship, then you really need to start focusing on those 3 universities that you listed. I recommend starting with applying to the university that you ranked at number 1, क्योंकि अगर आपका उसमें admission हो जाए तो आपको scholarship उसी university को जाने के लिए मिलती है. But the second two are backup. So if you don't get into your first one, but you get into the second one, then you get a scholarship to go into the second one. Now, once you've applied for the scholarship, you've applied for universities, the next step is to wait for the results. And the interviews are usually around March, April. So उससे पहले आपको वो बता देंगे कि आप इंटरव्यू की कॉल आई है या नहीं आई. If you do get called for the interview, that is amazing. And then I have a couple of small tips for you. The first one is just be very confident, and with confidence, my rule always is fake it till you make it. For my interview, I was so nervous, but I walked in and I pretended like I was the most confident person, and I think that really went in my favor. Thing is to not panic. अगर आप इंटरव्यू में कोई ऐसा सवाल आता है जिसका आपको जवाब नहीं आता, it's fine. Try to think of an answer on the spot, but don't panic कि ओ मैंने तो ये prepare नहीं किया था. The third thing is कि अपनी जो application और special जो essay questions हैं उनको अच्छी तरह से देख के जाएं, because in my case the interview was literally revolving around the essay questions. So for example, अगर मैंने leadership के बारे में कोई 2 examples दी हैं कि ये मेरी leadership skills हैं, तो they asked me to elaborate on those कि अच्छा तुमने यहाँ तक बताया है तो उसके बाद क्या हुआ. So you really cannot be making things up. It has to be actual experience that you have, otherwise it's a problem. And even if you don't get called in for the interview this year, you can always apply the next year or the year after. I know people जिनका 1 साल में नहीं होता और अगले साल में हो जाता है interview में qualification. So don't lose hope. It's definitely worth applying again. Now, once your interview is done, again, you have to wait a couple months until the results. And if you're waitlisted, then you have to wait until, I believe, August of 2020 to actually find out if you will be given the scholarship or not. Either way, it's important to remember कि applicants बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत लोग बहुत talented होते हैं, so you may or may not get the scholarship. That is not indicative of your worth as a person. And if this does not work out, there are so many other opportunities that you should definitely explore. होप ये वीडियो बहुत मोटिवेशनल एक वीडियो होगी, टेलिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप. इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ. आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ. एंड पीपल हु कीप आस्किंग मी GPA, ट्रस्ट मी, मेरा GPA बहुत कोई कमाल नहीं था, एंड इट डज नॉट मैटर. अगर आपके जहन में कोई और सवाल हैं जो मैंने मिस कर दिए हैं, प्लीज़ डू लीव देम इन द कॉमेंट बॉक्स डाउन बिलो. As always, thank you so much for watching. Thank you so much for subscribing. And if you like the video, please press the like button. Bye.